نیت تھی इनकी गवर्नमेंट की, वो उधर मुझे बिल्कुल सामने नजर आई। और ये कोई रैंडमली नहीं हुआ। जब हम अंदर दाखिल हुए तो मुझे ये समझ आ रही थी कि एटीसी में आज कुछ होगा। मैंने कुरैशी साहब को भी ये रिक्वेस्ट की कि हमने बर्दाश्त करना है इनको, क्योंकि हम इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। उसके बाद जो होगा, इनका अमल होगा, उसके रद्द अमल में हम अपना काम करेंगे। जनाब स्पीकर, ये रुथलेस वाली बातें जो है जनाब स्पीकर, ये सामने आ रही हैं। बच्चे साहब, मैं आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, एंड इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। ऑन द ट्रेजरी बेंचेस फाइनेंस मिनिस्टर ही बैठे हैं, मैं आपको ही तकलीफ देता हूँ हुजूर। जरा प्लीज बताएं कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक कोर्ट रूम में किसी अक्यूज्ड से मिलने गए और पुलिस की उनके साथ ये हाई हैंडेडनेस है जो वो कंप्लेंट कर रहे हैं। एक तो ये है कि मैं इनसे कह दूं कि आप प्रिविलेज मोशन मूव कर दें, एंड देन अगेन वी टेक इट एज अ प्रिविलेज मोशन, और इधर एज अ गवर्नमेंट मिनिस्टर टू द ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनके साथ और अरकान भी हैं, आप इनकी इस बात को सुनने के बाद क्या कहते हैं? जनाब स्पीकर, पहले तो मैं कहना ये चाहूँगा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, मगर हम लोग भी इस चीज़ से गुजरे हैं जी। पिछले 5 साल जब इनकी हुकूमत थी, यहाँ पे थे और हम वहाँ पे थे, और वो भी जी, नो क्रॉस टॉक सर, प्लीज लेट हिम आंसर। और जनाब स्पीकर, एक वो वक्त भी था जब हमारे अपोजिशन लीडर साहब को इन्होंने नाजायज़ कैद में रखा हुआ था। जनाब इनके जो बानी हैं इमरान खान नियाजी साहब ने झूठे केसों में उनको, हमजा शहबाज शरीफ साहब जो उस वक़्त के अपोजिशन लीडर थे, और उनको 2.5 साल तक कैद नाहक काटनी पड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो यहाँ बैठे हैं और हर किस्म की बात भी करते हैं, और उनको बहुत टाइम लगा प्रोडक्शन ऑर्डर लेके इस हाउस तक आने में। तो जनाब स्पीकर, मगर हम फिर भी इस चीज़ को जो है समझते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, और आपके हुक्म के मुताबिक जो भी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स थे, और उनको हम बिल्कुल इनसे मैं नाम ले लेता हूँ, हम उनको बुलाते हैं, और आईजी साहब को मैं बल्कि कहता हूँ आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो इस चीज़ को देखें कि आइंदा से अगर ये जाएँ कोर्ट रूम में तो इनको मिलने दिया जाए। मगर मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जनाब स्पीकर। हमारी लीडरशिप, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जनाब शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, और किस किस के नाम लूँ जिनको इन्होंने कैद नाहक जिन्होंने काटी, जिन पे केसेस बनाए गए। हमें तो ये तो कोर्ट रूम तक चले गए जनाब स्पीकर, हमें तो अदालत के हाथे में नहीं घुसने दिया जाता था इनके दौर में। मैं इलेक्टेड एमपीए था, तब इस हाउस का मेंबर था, तो हमें अदालत के हाथे में नहीं घुसने दिया जाता था। कोर्ट रूम तक जाना तो दूर की बात है। मैंने खुद धक्के खाए हैं पुलिस से, इनको तो धक्के नहीं ना पड़े। इनके दौर में मैंने पुलिस से धक्के खाए हुए हैं, पुलिस ने हमें धक्के मारे, हमारे वर्कर्स को। हम इलेक्टेड एमपीएस के साथ ये होता रहा है, मगर हम इनके साथ ये नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, इन्होंने जो हमारे एमपीए की है, जिन्होंने पुलिस के साथ इन्होंने कहा कि उन्होंने कोई बात की है, तो इनको मैं बताता चलूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको शो काज नोटिस इशू कर दिया है, और अब वो इन राइटिंग जवाब देंगे एमपीए साहब। हमारी हुकूमत में इस तरह का कोई काम नहीं होगा कि इनको या किसी भी मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से दरख्वास्त करूंगा। Yes, we have a bitter past, all of us have it. Yes, we have testing times, मुश्किल मुकदमात हैं, दहशत गर्दी की अदालतें हैं, बोझ है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस सूरत हाल में जहाँ पर इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स अपने किसी लॉफुल राइट को एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो सर आई विल एज अ स्पीकर जेलसली गार्ड इट, जेलसली। आज का ये वाकया जो पेश है, इसको आप अपने तौर पे देखें। ऑपोजिशन लीडर वहाँ गए, अगर ये एक चेकर्ड पास्ट है, मैंने भी वो विसल्स, वो धक्के, वो चोटें खाई हैं, मेरा सर फटा है, मुझे नीचे सीढ़ियों से धक्का देकर फेंका गया है। मैं भी हाउस का मेंबर था, मुझे एक डीएसपी ने स्कफल करके एक प्रिजनर वैन में बिठा लिया, मैं भी किसी को मिलने ही गया था। लेकिन
وہ اچھا پاسٹ نہیں ہے. سو میری آپ سے یہ بڑی کلیئر ایز اے اسپیکر ان دا ہاؤس میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے اپوزیشن کے ممبرز اپنے کسی پارٹی ممبر کو ملنے کے لیے کورٹ پریمیسز میں اپنا لافل رائٹ ایکسرسائز کرنے گئے ہیں اور وہاں پر وہ میل ٹریٹ ہوئے ہیں تو اس پر گورنمنٹ ضرور اس کو دیکھ کے آئندہ کے لیے اس کی روک تھام کرے اور جو ان کے بطور ممبر کے استحقاق ہے اس کے اوپر اس طرح سے معاملہ دوبارہ وہ نہیں ہونا چاہیے. رانا صاحب ایک منٹ. جناب اسپیکر سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے کہا سر پہلے میں آن بہاف آف دا گورنمنٹ ان سے معذرت چاہوں گا کہ جو کچھ ان کے ساتھ وہاں پہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم لوگ اس چیز میں بالکل بلیو نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو بھی الیکٹڈ ممبرز کورٹ میں جائیں گے ہم ان کو پوری کوشش کریں گے کہ فیسیلیٹیٹ کریں. وہاں پہ جو بھی پولیس اور دیگر ایجنسیوں کے لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ یہ اپنے لیڈر کو. تھینک یو منسٹر فائنانس. جی رانا صاحب. جناب اسپیکر یہ جو واقعہ ہے اٹس ناٹ اے نارمل واقعہ نہیں ہے, اٹس اے ویری سیریس نیچر. فاضل وزیر صاحب نے اپنا قصہ بیان کیا ہے, اگر ان کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہوا ہے. میری آپ سے درخواست ہوگی فار دی سینکٹیٹی آف دی ہاؤس آپ ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں. ان کی جو ریزولوشن آپ نے خود کہا یہ موشن کا اٹ شوڈ بی تھورلی پروب اور اس پہ دیکھا جائے, کیونکہ آپ نے کل تشریف فرما نہیں تھے. جو پولیس کا یہ آپ نے رویہ رکھا ہے نا یہ بڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. آپ ان کو تمغہ جرت دے دیں, تمغہ بلکہ نشان حیدری دے دیں تاکہ مرتے تو ہے نہیں ہے یہ. تو میری آپ سے گزارش ہے دس میٹر شوڈ بی ریفر ٹو اے اسپیشل کمیٹی ٹو پراپرلی پروب. جی رانا صاحب میں جی لیڈر آف اپوزیشن پلیز. سر میں اپنے آنریبل منسٹر صاحب کی معلومات کو ضرور درست کرنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ حمزہ شہباز صاحب جب پروڈکشن آرڈر ہوتے تھے تو اسپیشل ریلیکسیشن کے ساتھ ہوتے تھے. ہم نے ان کو ادھر جب ہماری گورنمنٹ تھی تو وہ ادھر آتے تھے اور ان کی عزت اور تکریم کا خیال رکھا جاتا تھا. جناب یہ آج دیکھیں آپ نے بھی اپنے واقعات سنائے ہیں, ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے بھی اپنے واقعات سنائے ہیں. دیکھیں سر بات میری نہیں ہے, بات اس ہاؤس کی ہے. میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں اپنی ذات کی بات آخر میں کروں گا. سر آپ کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ بھی غلط تھے. آج جو ہمارے ساتھ ہوا ہو سکتا ہے کہ اگر جج صاحب ان کا رویہ بہت اچھا تھا, میں اپریشیٹ کروں گا اے ٹی سی کے جج صاحب کو. انہوں نے کہا کہ ان کا حق بنتا ہے یہ آ کے یہ مل سکتے ہیں, انہوں نے انٹروین کیا اور جج صاحب اپنے ریٹائرنگ روم سے. میں بس میں آپ کی بات ہی از ماسٹر آف ہز کورٹ, وہ اپنی اگر آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ کا بطور اپوزیشن لیڈر ادروائز آپ کا ایک پریولیج ہے ایز ممبر آف دس ہاؤس, آپ کا ایک پریولیج ہے اور کسی صورت بھی یہ ہائی ہینڈیڈنیس فار اے سٹیزن آف دس پروونس وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اگر ابھی اس کو منسٹر فائنانس دیکھ لیتے ہیں, اس پر ایک رپورٹ وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے رانا صاحب نے کہا ٹو یور سیٹسفیکشن اینڈ ٹو انشور کہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہوا, اس کی پروسیڈنگ کو فردر آگے انہانس کر لیں. سر میں اتنی عرض کروں گا سر, ایک منٹ میں لوں گا اسپیکر صاحب. سر بات یہ ہے, بات رپورٹ لینے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی ممبر جائے چاہے وہ ٹریوی بینچز سے ہو چاہے وہ اپوزیشن سے ہو, اس کی بیسک کیا ہماری پریویلیج سر کیا ہے؟ درست ہے سر, میں نے تو ہماری عزت ہو. I have construed it as بجائے کہ میں اس کو میں بجائے کہ اس کو ہم ایک کمیٹی کے ریفر کریں, آئی ایم کنسٹروئنگ اٹ ایز اے ہول ہاؤس کمیٹی. میں تو سیدھی بات ان سے میں ادھر ہاؤس میں رپورٹ مانگ رہا ہوں, وہ کمیٹی میں جا کر منگوانے سے زیادہ افیکٹو, مور امپاورڈ, مور ڈیٹیل. اینڈ آئی ایم آسکنگ فائنانس منسٹر ٹو ریڈ آؤٹ دیٹ رپورٹ ان یور پریزنس. یہاں پر یہ پڑھ کر بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ وہاں پر کیا واقعہ پیش ہوا اور فردر اکارڈنگلی ہم اس کو دیکھیں گے. سر اسی سیشن میں اس کا فیصلہ ہوگا. جی ضرور انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جناب اسپیکر یہ بالکل اچھی بات آپ نے ہاؤس کی کر دی ہے. میرے ساتھ خود یہ ایک واقعہ ہے کہ میں محمود رشید صاحب کی ملاقات کے لیے کیمپ جیل گیا تو بتا کر میں اندر تو چلا گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی, اونلی بلڈ ریلیشن کین میٹ. آپ مجھے یو آر اے لا نوئنگ پرسن, از دیر اینی بار ٹو میٹ اے پولیٹیکل پریزنر کہ اس کا بلڈ ریلیشن نہ ہو؟
आई वॉज रिफ्यूज टू मीट हिम। तो इस पे आप कोई डायरेक्शन दे दें ताकि अगर एक फादर मेंबर लेट मी चेक इनटू इट राणा साहब। ये आप ऑनरेबल मेंबर्स हैं और जो मेरी मालूमात और इतला है कि आपके पास डिफरेंट जेल्स को जिसमें जाने के लिए आपके साथ एक ट्रीटमेंट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक वो आपको लॉ कुछ चीज़ों की इजाज़त देता है, तो उनको हम इंश्योर करवाएंगे। मैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीडिंग एंड जनरल डिस्कशन पे जाने से एक रूलिंग जो एक बड़ा पर्टिनेंट नुक्ता राणा आफ्ताब अहमद खान साहब मेंबर फ्रॉम PP 108, इनका एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट था, उसकी बड़ी लीगल कॉनोटेशन थी और वो इस रूलिंग का मैंने कहा था कि क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ में उनकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं तो आई विल एक्चुअली तो हमारे पास एक फायर वॉल अवेलेबल है जिसमें हम कहते हैं कि हाउस की प्रोसीडिंग किसी कोर्ट ऑफ लॉ में सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकती और हम उसको भी जेलसली गार्ड करते हैं। बट ये क्योंकि नेचर उसकी थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव थी तो इस प्रोसीडिंग को हमने उस फायर वॉल को खुद ब्रीच किया है। अगर वो अपोजिशन मेंबर इसको अपनी प्रोसीडिंग को लेकर जाना चाहें कोर्ट ऑफ लॉ में तो फॉर दैट पर्पस मैंने राणा आफ्ताब अहमद खान साहब के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक रूलिंग रिजर्व की थी। It has been reserved 3-4 days back. So I am reading out for the convenience of the House, or I would say to the Secretary Assembly, that copy should be given to the Mr. Aftab Ahmed Khan, and accordingly, if it needs to be given in the court, this ruling shall dispose of the point of order raised by Honourable Member Mr. Aftab Ahmed Khan, MPA PP 108, during the sitting held on March 15, 2024. Brief background of this ruling is that on March 13, 2024, the Election Commission of Pakistan (ECP) issued a notification withdrawing ab initio its earlier notification dated February 17, 2024 to the extent of Mr. Umair Wasi Chaudhary, PP 100, and declaring Mr. Khan Bahadur as the returned candidate from PP 100 as a result of a recount by the concerned returning officer. On March 15, 2024, when Mr. Khan Bahadur, returned candidate from PPXO, attended the sitting of the assembly to make the oath, Mr. Aftab Ahmed Khan raised a point of order that the speaker must not administer the oath to the above mentioned member-elect until the expiry of the period of limitation for appeal as mentioned in Rule 38 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Punjab 1997, the rules. However, having reserved my detailed ruling in this regard and referring to Rule 6, Sub-Rule 4 of the rules, I administered oath to the member-elect pursuant to the said notification of the ECP. Now therefore, in exercise of the powers vested in me under Rule 209 of the rules, I, Malik Muhammad Ahmed Khan, the Speaker, announce the following detailed ruling on the issue as under. Pursuant to the notification, second notification issued by the Election Commission of Pakistan, dated March 13, 2024, the member-elect from the PP 100, Mr. Khan Bahadur, attended the sitting of Assembly held on March 15, 2024 for making oath. He had been declared result as recounting of votes against Mr. Umair Wasi Chaudhary, the previously notified member from PP 100. When I called upon Mr. Khan Bahadur to make oath as member, the Honourable Mr. Aftab Ahmed Khan raised the point of order that Mr. Speaker could not administer the oath to the member-elect referring to the Rule 30 of the Procedures of the Provincial Assembly of the Punjab. The Rule 38 is reproduced below for convenience, no need to read. Honourable Mr. Aftab Ahmed Khan, MPA PP 108, also raised the point that if Mr. Speaker had administered oath to him, what would be the fate of unseated member from PP 100 if a court of law decides in his favour subsequently? Honourable Mr. Aftab Ahmed Khan also raised the point, and it needs a serious consideration. I have given detailed consideration to the issue and surrounding the facts and circumstances in light of the precedents, relevant provisions of the Constitution, the rules and also the rules of other assemblies, as well as the prevalent practice in the various legislatures. I have reached the conclusion that having received a duly issued notification by the competent authority
i.e. the Election Commission of Pakistan, I was under obligation to administer the oath to the member-elect under Rule 6.4 of the rules. Honorable Mr. Aftab Ahmed Khan did not produce or quote any document or restraining order in respect of the notification of the ECP dated March 13, 2024. Hence, on receipt of the said notification, I was bound to administer oath to above-mentioned member-elect from PP 100 in terms of Rule 6.4 of the rules, as is required under the law. Rules, parliamentary practices and conventions. The Rule 6.4 imposes an unambiguous duty upon the presiding officer. A person elected to the assembly who has not already made the oath may do so before the assembly at any time, subject to the prior intimation to the speaker or to the secretary. Secondly, Rule 6 does not prohibit or places any specific bar or restriction upon the presiding officer. In fact, the tenor of the rules in that the presiding officer does not have such discretion vis-a-vis administering of the oath of membership after the duly issuance of the notification by the ECP. If the issue of administering the oath arises, the presiding officer is bound by the self-contained provisions of the rules, which in this case is Rule 6. There is no other relevant provision in the rules of law or that specifically restricts the oath of member. The general rule of interpretation is that general provision give way or yield to specific provision of law. In the instant case, the specific provision is Rule 6, not Rule 38. Moreover, the high constitutional importance of oath of a member is evident from the fact that it is specifically mentioned and provided in the Constitution of Pakistan, Article 65, read with Article 127 and third schedule of the Constitution. However, Honorable Member Mr. Aftab Ahmed Khan, instead of considering the relevant provision of the rules, relied upon Rule 38. His contention was that Rule 38 places a bar upon the Speaker from administering the oath. I am of the considered view that instant matter does not come under the purview of Rule 38 as discussed above. Additionally, Rule 38 concerns the unseating of a member as a result of election dispute, whereas in my opinion, the issue under consideration is not an election dispute, rather an administrative affair envisaged in Section 125 of the Election Act 2017, appeal against count which provides the representation of recounting is filed with the Secretary. ECP and the Commission may neither dismiss the appeal or determine the result afresh after recount and make such consequential order as may be necessary. It is pertinent to mention that as Section 6 of Section 125, the decision of the Commission is final. Thirdly and alternatively, Rule 38 appears to be applicable to unseating of a member. However, in instant case, the ECP's notification unambiguously declares that Mr. Umair Wasi Chaudhary had never been a member of the Assembly to begin with. His notification was declared withdrawn, void ab initio. As far as the point raised by Mr. Honorable Aftab Ahmed Khan about the fate of the unseated member, if he gets any relief subsequently from a court of law, I rule that in such eventuality I would again administer oath to him if Election Commission of Pakistan issues notification to this effect. It would be pertinent to quote a precedent from the previous Assembly 2018-2023 when a similar eventuality occurred pursuant to the recounting held on PP 123 in compliance with the order of SCP, ECP, I beg your pardon, it is SCP, ECP recalled its notification August 10, 2018, while its subsequent notification dated February 12, 2019 to the extent of Sayyid Qutb Ali Shah and Ms. Sonia was declared elect from PP 123 in his place. She made oath on the first available next sitting of the Assembly, i.e. on February 20, 2019, without any objection raised on the pretext of Rule 38 regarding taking into account the expiry of the period of the limitation for appeal. Therefore, I acted accordingly and administered the oath to the member-elect under Rule 6. With this reasoning, I rule out the points of order raised by Honorable Aftab Ahmed Khan, PP 108. Thank you very much. Sir. Thank you very much, sir. As a procedure and as a decorum, I cannot challenge this ruling.
مگر میرا خیال تھا رول 38 میں آپ ایک چیز اور پڑھ لیتے دیٹ انکمبنٹ ممبر واز گیون اے رائٹ آف اپیل فار 3 days. اس کے وہ 3 دن ایکسپائر نہیں ہوئے تھے ایکسپائری ڈیٹ پہ. اس پہ آپ نے کوئی اس میں وضاحت نہیں فرمائی ہے کیونکہ ہی ہیڈ دی رائٹ فار 3 days ٹو اپیل. وہ 14 کو ہوتا ہے, 15 کو آپ بہت لے لیتے ہیں. میں عرض کروں آپ تشریف رکھیں. I have given the ruling giving demise to the matter straight away. I have acted under Rule 6, Sub-Rule 4, and Rule 38 is applicable to election dispute only, and that comes when a proper due process of tribunal concludes. So this is not that case. So I have acted under Rule 6(4). یہ میں نے آپ کی اس کنوینئنس کے لیے کہ in any case, if it is a matter before the court of law, this ruling could be scrutinized there, and if any right accrues, the member elect today and the person who has been declared void ab initio, unka ko right infringe now. To secure the parallel level playing field, I have given this ruling, sir. اب ہم آج کی جی پلیز. سر یہ رول 33A ہے اینول کیلنڈر فار سیشنز آف دی اسمبلی. اس میں سر درخواست یہ ہے کہ یہ کیلنڈر کم از کم جاری فرما دیں تاکہ آنریبل ممبرس کو پتہ ہو اور ایکسپیکٹڈ ڈیٹس ہمارے سامنے ہوں. ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی بلیو دیٹ ہیز بین ڈن. جی یہ تو وہ ہوا ہے. اینڈ وائی کاپی از ناٹ. کین دا سیکرٹری اسمبلی اپروچ دا ڈائس پلیز. عامر صاحب یہ جو آپ نے کیلنڈر دیا ہوا ہے, کیلنڈر آنریبل ممبرس میں ڈسیمنیٹ نہیں کیا. اگر دیکھیں کاپیز تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت شکریہ. سالانہ بجٹ 2023-24 پر بحث کا آغاز آج آخری دن ہے. آج میرے لیے میرے پاس معزز اراکین کی لمبی فہرست موجود ہے. اراکین سے استدعا ہے کہ مختصر وقت میں اپنی بات مکمل کر لیں. آخر میں وزیر خزانہ بجٹ پر بحث کو وائنڈ اپ کریں گے. سو دا لسٹ آئی ہیو ٹوڈے on the government side is almost like 35 members and 30 or more from the opposition side. So میری درخواست یہ ہوگی کہ پلیز ریپیٹیشن اوائڈ کریں. اپنی جو بھی بات آپ نے کرنی ہے اس کو مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اراکین بات کر سکیں. So I would invite محترمہ آمنہ حسن. محترمہ آمنہ حسن, جناب محسن ایوب خان, جناب عمران الیاس چودھری, محترمہ سارہ احمد, محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ, جناب محمد ثاقب خورشید صاحب. اچھا کھڑی ہیں. I beg you an apology. جی آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے بجٹ پہ بات کرنے کا موقع دیا. جناب اسپیکر, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا, جنہوں نے مریم نواز کو پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے نام پر نامزد کیا. مجھے پنجاب کی ہر خاتون کو, اس ایوان میں بیٹھی ہوئی ہر بیٹی کو, پنجاب کی ہر بیٹی کو اور پاکستان کی ہر بیٹی کو مریم نواز شریف پر فخر ہے. اور میں ان کو خطاب دیتی ہوں کہ وہ آئرن لیڈی آف پاکستان ہے. جس طرح انہوں نے بریوری سے پارٹی کو مشکل ٹائم میں نکالا اور اپنے والد کے ساتھ کھڑی رہی. جناب اسپیکر, آج سے 3 سال پہلے بھی میں نے بجٹ سپیچ کے دوران یہ بات ایوان میں کی تھی کہ جادو ٹونے سے حکومتیں بنائی تو جا سکتی ہیں پر برقرار نہیں رکھی جا سکتی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پنجاب دشمن حکومت ختم ہوئی اور اپنے وقت کا فرعون
कानून के मुताबिक जराइम की सजा भुगत रहा है। देखिए जनाबे डोगर स्पीकर, साहब एक सेकेंड, डोगर साहब एक सेकेंड प्लीज, डोगर साहब एक सेकेंड, डोगर साहब एक सेकेंड जी प्लीज, एक सेकेंड जी संधू साहब प्लीज। आप मुझ पर ट्रस्ट करें सर, अगर कोई चीज अनपार्लियामेंट्री होगी आई विल एक्सप्लेन इट प्लीज। आप अपनी ये आप जितने मेरे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हैं, ये जनरल डिस्कशन इज योर डे, आपका दिन है। जितनी आप इसमें सैनिटी रखेंगे उतनी आपकी बात मुअस्सर होगी सर। आपने ऑब्जेक्ट किया, अलाउ मी टू लुक इनटू इट, मैं देख लेता हूं, बट नो क्रॉस टॉक्स। ये जनरल डिस्कशन का आज तक ये आपके सीनियर्स आगे बैठे हैं, राणा आफ्ताब साहब हैं, भत्तर साहब हैं, जनरल डिस्कशंस में इंटरप्शंस बड़ी मुश्किल, कोई क़यामत बर्पा हो रही हो तो शायद कोई रोकता है। जनरल डिस्कशंस में द एब्सोल्युटली आई विल इंश्योर दैट नो क्रॉस टॉक्स प्लीज। आप हसन डोंट वरी एट ऑल, नो क्रॉस टॉक्स वुड बी अलाउड, नो क्रॉस टॉक्स वुड बी अलाउड, नो क्रॉस टॉक्स। जो ऑनरेबल मेंबर का राइट है, दैट इज अ स्पीच, इट शुड नॉट बी इंटरप्टेड। जी प्लीज हिना, एंड यू डोंट हैव टू रीड इट। आई एम नॉट। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज 30 दिन मुकम्मल हो रहे हैं अवामी जमहूरी हुकूमत के, और मैं आपको अनाउंस करना चाहती हूं कि आज 30 दिनों में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 30 प्रोजेक्ट्स जिनको बजट के अंदर रखा गया है, वो मैं इसकी कॉपी भी दे दूंगी। ये 30 के जो पॉइंट्स है ये देख भी लें। तो जनाब स्पीकर, जिस रफ्तार से मरियम बीबी काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने इन 5 सालों में 10 सालों का काम कर देना है। 5 अपने साल और 5 वो साल जो इनके वसीम अकरम प्लस थे और फरा गोगी और पिंकी पीरनी के गैंग ने जो पंजाब के अंदर सजा दी थी पंजाब के अवाम को। तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मरियम बीबी ने अपने 10 सालों, इन 5 सालों में 10 साल के काम करके दिखा दिए हैं। जनाब स्पीकर, मैं जब पंजाब का ये बजट देख रही थी तो सबसे पहले तो मुझे रमजान का निगहबान पैकेज, जिस पे इन लोगों ने बड़ी तनकीद की, उस पे मैंने देखा कि जिस तरह 60 लाख लोगों को, मुस्तहिद लोगों को उनके घर के ऊपर राशन दिया गया, उसकी अपलॉड हमें भी करनी चाहिए और अपोजिशन को भी करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, खवातीन वर्किंग वुमेन के लिए जिस तरह हॉस्टल्स बनाने का इकदाम इस बजट में है, जिस तरह बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स का कहा गया है, उसके लिए भी हम खवातीन और पंजाब की सारी खवातीन अपलॉड करती हैं। जनाब स्पीकर, तालिब इल्म जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। जैसे हमने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब ने भी लैपटॉप्स दिए, इसी तरह मरियम बीबी ने इस बजट में तालिब इल्मों के लिए लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा के अंडर नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन है और हमारा विजन हमारे कायद का विजन है। एंड सॉरी टू से, हमारा विजन वो नहीं है कि अंडे, कट्टे, मुर्गियां या लंगर खाने खोलें। जनाब स्पीकर, हमारे विजन में नौजवानों को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनाने के लिए उनको आईटी की स्किल्स दी जाएंगी। हमारे इस बजट में अरफा करीम टावर का, 5 आईटी सिटीज का लैपटॉप्स, स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, ना कि जो ये अपने यूथ को सिखाते हैं कि गाली गलोच करें, फेक प्रोपेगेंडा करें, पेट्रोल बम्स बनाएं और रियासत के अदारों पे अटैक करें और सोशल मीडिया की ट्रोलिंग करें। तो हमने बिल्कुल अपने नौजवानों को सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एम्पावर करना है। जनाब स्पीकर, मैं
उन बच्चों को भी खुशखबरी देना चाहती हूँ और मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिनके लिए पीस की पंजाब एंडोमेंट फंड की बहाली जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने स्टार्ट की। तो इस इक़्तिदाम से, इस स्टेप से मरियम बीबी साहिबा वो मोहब्बत करने वाली माँ हैं, नजर आती हैं, जो पंजाब की आवाम के हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं। मैं उनकी स्पीच में देख रही थी, उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों के बच्चे आईवी लीग्स में पढ़ेंगे तो पंजाब के सब बच्चे आईवी लीग्स में पढ़ेंगे। तो इसमें मैं जरूर तरबियत जो कलसूम नवाज साहिबा की तरबियत है, जो मरियम नवाज साहिबा को दी गई है, उसका जरूर जिक्र करूंगी। जिस तरह हमारी मुंतखब वजीर आजम चल के ऑपोजिशन के पास गई और उन्होंने कहा कि इस बजट में ना सिर्फ हुकूमत के बेंचेस के प्रोजेक्ट्स होंगे बल्कि आप लोगों के लिए भी मेरे दफ्तर खुले हुए हैं। जनाब स्पीकर, जैसे आपको पता है कि हमने हेल्थ पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो हमारे मरियम नवाज साहिबा ने इसमें, मैंने जनरली पूरी ये पढ़ी, इसमें सबसे अच्छा मुझे जो लगा कि लाहौर का एक कैंसर हॉस्पिटल, सरगोदा में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल और हेल्थ को बेहतर करने के लिए स्पेशली स्मॉग के ऊपर कंट्रोल और सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी स्टार्ट किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि हमारे कायद के विजन में हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जिस तरह मैं देख रही थी कि इस बजट में मोहतरमा ने पहले 6 महीने में तमाम सड़कों को तामीर करने का प्लान और मेक श्योर किया कि एक ऐसा जाल बिछे कि साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब के साथ सारे शहर आपस में जुड़ जाए। तो क्योंकि जनाब स्पीकर मुझे पता है टाइम कम है, तो मैं इसलिए बस एंड पे रैप अप करूंगी। जनाब स्पीकर, जो डार्क टाइम हमने 3.5-4 साल इनकी हुकूमत में जो तबाही का टाइम गुजारा, जिस तरह हमने देखा कि पंजाब के अंदर कमीशन पे काम किया गया, जिस तरह हीरो की अंगूठियां वसूल की गई, जिस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसे करके करप्शन की गई, तो आपको पता है कि हमारी वजीर आला ने कहा है कि करप्शन इज माय रेड लाइन। तो हमने सिर्फ काम करके दिखाना है। ये इधर बैठे हैं लोग, अगर ये अपने टाइम में मुझे कोई एक स्कूल, कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक कॉलेज, कोई एक मंसूबा, कोई एक ऐसी चीज दिखा दे जो इन्होंने अपने टाइम में की है, तो एंड पे मैं कहती हूँ कि अभी ये वाला जो बजट है ये झलक है। 2024 से 25 के अंदर जो बजट आएगा वो मियां नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक पूरा होएगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। मोहतरम जनाब राना शहबाज अहमद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, PDM2 ने 4,480 अरब 70 करोड़ का बजट नहीं दिया बल्कि एलानिया डाका डाला है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। जनाब स्पीकर, मोहतरमा जो फरमा रही थी, पहले भी उस्मा कारदार साहबा ने भी तकरीर की, वो पहले उस्मान बुज़दार साहब की भी ऐसे ही तारीफें करती थी, बाद में चौधरी परवेज राय की भी ऐसे ही तारीफें करती थी, आजकल वो मरियम नवाज साहबा की तकरीरें कर रही हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये जो बजट इन्होंने एक मोटरसाइकिल
What